student, welcome you all. So today I am going to teach you a very interesting chapter, that is A House is Not a Home, written by Jane Godioso. So basically this chapter is going to very interesting, and in this chapter we will see what is the difference between house and a home. So basically you all understand कि house and home both are similar words. No, it's totally different. See, house is made up of from bricks, stones, cements and all. But the home, in home we will see lots of things. Means in home we are family, right? And in families they have love and affections for each other. They have a bond between them. So there are lots of changes in our life we will see. All right, so similarly home और house में भी बहुत सारे differences हमको इस chapter में देखने को मिलेंगे. Let's start. So, a house is not a home. This story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problems? So basically, Jane Goodyear, so it's a female writer, and he was describe her own story. But in this story, she shared her own experience. बट आप ये देखोगे स्टोरी में हम एक मेल कैरेक्टर है, तो उन्होंने जब ये स्टोरी लिखी तो खुद को ही प्रेजेंट किया है, बट इन अ मेल कैरेक्टर. तो इन्होंने मेल कैरेक्टर लिया है. मे बी इनको कुछ अच्छा लगा होगा, उन्होंने सोचा होगा मुझे ऐसा ही कुछ स्टोरी मेक करनी है. दैट्स वाई इन्होंने मेल कैरेक्टर लेके अपनी स्टोरी नरेट करी है, राइट. सो बेसिकली इस स्टोरी में हम देखेंगे कि बीइंग अ टीनेजर व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस वी हैव टू फेस, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव टू फेस, और किन प्रॉब्लम्स के साथ हम ग्रो करते हैं. ऑल राइट. एंड जो ऑथर है जेन, उन्होंने कौन सी प्रॉब्लम से ओवरकम किया है. सो हियर माई फर्स्ट, सो बेसिकली माई माइंड आई जो भी देखेंगे तो इट्स लाइक इट्स, ये जो है ऑथर हैं ये अपने बारे में बता रहे हैं बट इन अ मेल कैरेक्टर. So my first year of high school felt awkward. So here the awkward means strange. So कह रहे हैं कि जब मेरा जो फर्स्ट स्कूल था स्कूल में, it was very strange, it was very awkward. After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. So basically she said कि जब मैं स्कूल में था, मतलब हम मेल कैरेक्टर के बारे में बात करें तो मेल के कंटेंट में ही बात करेंगे. यानी जब मैं स्कूल में था तो आई वॉज द हेड ऑफ द स्कूल. आई एम इन माई क्लास, आई एम द हेड ऑफ इन माई क्लास, एंड ऑल सीनियोरिटी जो भी अपर ग्रेड के मुझे बेनिफिट्स मिलते थे वो मुझे मिलते थे, एंड आई कुड अफोर्ड दैट. It felt strange starting over as a freshman. So now, when he enrolled in some new school, it was quite very strange कि उन्हें एक फ्रेशर की तरह ट्रीट किया जाएगा. सपोज आप किसी स्कूल में मॉनिटर हो या रिप्रेजेंटेटिव हो या हेड हो, और सडनली आपको किसी और स्कूल में एडमिशन लेना पड़े, एंड दे ऑल द पर्सन ट्रीट यू लाइक अ फ्रेशर. So because you are fresher for them, so they treat like you as a fresher. So it was very strange, or it was very difficult to accept कि हम वो सारी चीज़ें एज अ फ्रेशर कैसे यूज़ करेंगे, कैसे देखेंगे, बिकॉज हमने तो हेड बन के वो सारी चीज़ें इंजॉय करी है. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. So basically कह रहे हैं कि जो स्कूल पहले मेरा था उससे बिगर स्कूल जो है वो अभी जिसमें मेरा न्यू एडमिशन हुआ है वो है. बट द मैटर इज दैट, बट द फैक्ट इज दैट कि मेरे जो मतलब वर्स्ट पार्ट क्या था कि इनके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे वो किसी और स्कूल में सेंड किए जाते, मतलब उनका किसी और स्कूल में एडमिशन हुआ था और वो बहुत अकेले थे. देखो क्या होता अगर वो साथ में अपने फ्रेंड्स के जाता तो इट वॉज ओके विद हिम कि ठीक है उनके फ्रेंड्स है, फ्रेशर है तो क्या हुआ, उनके फ्रेंड्स साथ में. बट उनके लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा कब क्रिएट हुई जब उनके फ्रेंड्स भी किसी और स्कूल में गए थे और वो दूसरी अकेले ही किसी और स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. सो हियर द वर्ड आइसोलेटेड मीन्स this word. Isolated means lonely. So that time he was feel very lonely.
I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. So he was missed his old teacher so badly. So that is the main reason वो अपने पुराने स्कूल में जाता था and visit करता था and to meet her old teacher. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. So as usual, teacher always motivated you, teacher always encouraged you. So in a similar way, his teachers also motivated him, his teacher also encouraged him कि तुम्हें अब क्या करना है, दूसरे स्कूल में पार्ट करना है, इन्वॉल्व होने की कोशिश करनी है और नए लोग बनाने हैं, नए फ्रेंड्स बनाने हैं, उनसे मिलना है. दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड probably end up loving my new school more than I had my old one. So they actually समझाते थे उसको. बेसिकली दे एडवाइज्ड हिम कि तुम धीरे धीरे स्लोली यू एडजस्ट देयर और प्रॉबेबली क्या होगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल लव योर न्यू स्कूल more than your old one. So they made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. So कह रहे हैं कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो और इससे हो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप आओ स्कूल में और हमसे मिलो, विजिट करो. इनके ओल्ड टीचर्स बोलते हैं. सो आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग. सो हेयर द ऑथर सेड कि नाउ आई अंडरस्टूड कि what they were trying to saying to me. I understood the psychology behind that because but I took some comfort in it nonetheless. So कह रहे हैं कि मैं एक comfort देख रहा हूँ कि ठीक है, आप टीचर्स हैं, आपके जो एल्डर्स हैं वो आपको अच्छी एडवाइस करेंगे. तो nonetheless मतलब होता है in spite of this fact. So कह रहे हैं कि ठीक है, मैंने बहुत comfort वे में इसको लिया और मुझे फैक्ट पता था, स्टिल मैंने उनको बहुत अच्छे से लिया कि मैं समझ पा रहा था कि टीचर्स हुए या हमारे पेरेंट्स हुए, दे ऑलवेज वरिड अबाउट अस. ठीक है, वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही बात करेंगे. So, one Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. So क्या हुआ, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक संडे के आफ्टरनून था जब स्कूल्स नहीं होते, स्कूल क्लोज होते हैं. So he was sitting at home in his dining room and वो टेबल पर अपना कुछ होमवर्क कर रही थी. So it was a cold and windy fall day. So it was a very cold day that time and we had a fire going in our fireplace. तो क्या आता था, एक फायर प्लेस होती थी जहाँ पे फायर रहता था. उस फायर से क्या होता था, पूरे घर में थोड़ी गर्मी थी. जैसे नाउ डेज वी यूज हीटर. ओके, सो एज यूजुअल माई रेड टैबी. सो हेयर द वर्ड टैबी मीन्स, सी दिस येलो बॉक्स. टैबी मीन्स अ ग्रे एंड ब्राउन कैट मोल्टेड विद डार्क स्ट्रिप्स. सो डार्क स्ट्रिप्स से वो कैट थी, ऐसे कुछ कैट दिखती थी, डार्क स्ट्रिप्स थे उसके, ग्रे और ब्राउन कलर की उनकी कैट थी. My red tabby cat was laying on top of my all papers. तो उनकी जो टैबी कैट थी वो उनके पेपर्स के ऊपर बैठी थी. प्योरिंग मीन्स मेक अ लो कॉन्टिन्यूस वाइब्रेटिंग साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेनमेंट. मतलब वो बहुत खुश थी और एक्सप्रेस कर रही थी अपने जो भी वो फील कर रही है ना. तो वो क्या करती, बहुत ही लो और कॉन्टिन्यूस साउंड्स, वो वाइब्रेटिंग साउंड्स वो निकाल रही थी जैसे यूजुअली कैट्स निकालते हैं. ओकेजनली सॉटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट स्केट. अब बेसिकली सॉटिंग मतलब टू हिट समथिंग, राइट. यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ ये याद रखिएगा. दिस वर्ड स्वेटिंग मीन्स टू हिट समथिंग. तो उसमें क्या कर रही थी, वो उस पेपर्स पे आके बैठी थी और पेपर से वो क्या, पेन से वो क्या कर रही थी, हिट कर रही थी उन पेपर को जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, मतलब वो कभी उनसे दूर नहीं रही. आई हैड रेस्क्यूड हर वेन शी वॉज अ कीटन. मतलब जब वो छोटी थी, कीटन थी, तो उस टाइम पे मैंने उनको रेस्क्यू किया था, बचाया था. एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज the one responsible for giving her the good life. So basically he said कि मैं जानता हूँ कि उसे पता है, उसे कौन, कैट को पता है कि I am the responsible कि उसको मैं एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करवाऊँगा. So giving her a very good life. My mother kept stalking. So here the word stalking means feeding and tending the fire. Means properly maintaining the fire basically यहाँ पे मतलब है. So my mother means the author mother kept stalking the fire to keep the house nice and warm. So हमेशा वो maintain करके रखती थी जिससे उनका घर क्या रहे, nice और warm रहे. Suddenly I smell something strange. So who is I here? I is
author. So suddenly author smelled something. It was very strange. Then I noticed it, smoke pouring in through the seams of the ceiling. Seams of the ceiling means होता है कि सीलिंग, सॉरी, जो आपकी सीलिंग होती है, ये जैसे सपोज आपकी सीलिंग है, सीलिंग के कॉर्नर से उनको क्या लगता है, कुछ धुआं सा उठता है, राइट, एंड स्मोक सी आती है. द स्मोक बिगिन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वॉज कुड barely see. तो द स्मोक कवर्ड द रूम too quickly and they couldn't see, they hardly see anything that time. So grouping means to search blindly. So in this smoke they search blindly वो search कर रहे थे a way to the front door, मतलब front door तक वो जाने की कोशिश कर रहे थे. blindly they were searching. We all ran out into the front yard. तो somehow they are successfully reached the front door. By the time we made our way outside, means थोड़ी देर बाद वो बाहर थे, the whole roof was engulfed in flames. The whole roof किस में engulfed हो गई थी, flames में जल गया था. and it was spreading quickly. जो flame होती है बहुत quickly spread होती है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो चली गई. I ran to the neighbors to call the fire department. So here the author ran to the neighbors और उनको क्या कहा कि किसको कॉल करो, फायर डिपार्टमेंट को कॉल करो. while I watched my mother run back into the house. So in between that थिंग कि ये अपनी मदर को देखते हैं क्या करते हुए कि वो उनकी जो मदर है वो किसकी तरफ भाग रही है, वो जो उनका हाउस जल गया था उसकी तरफ वो वापस भाग रही है. सो माई मदर देन ran आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. तो क्या लेकर आई, मेटल बॉक्स लेकर आई जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनके होंगे, वो उसको सेफली बाहर लेकर आ गई. होता है ना, मतलब हमारा अगर घर ऐसा कुछ हो रहा हो हमारे साथ, इफ द सेम थिंग हैपन विद अस, विल हैपन विद अस और हैपन विद अस, तो दैट टाइम हम भी देखेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो हम उसको ले आए. तो शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन crazed state ran back into the house. So whatever she would carry with us, she just dropped the case into, on the garden, on the land, and just run back towards the house. So I knew what she was after. My father had died when I was young. So he thought basically कि मेरे father जो की death हो गई थी किसकी, when I was young. So I was certain that she was not going to let his picture and let us go up in flame. So he was very sure about it कि definitely my mother could bring some pictures of her father, of his father, and some letters जो flame में ना जले तो वो उसको लेकर आ गए. तो they were the only things that she had to remember him by. So basically उनको याद करने की कुछ उनके pictures और उनके letters ही अब remaining थे. So still I screamed at her mom no. So still वो अभी भी अपनी mom को scream कर रहा था, चिल्ला रहा था कि mom no. No means don't go in the house. So I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. So suddenly वो भी अपनी मम्मा के पीछे भाग रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही क्लोजली उनका हाथ किसी ने पकड़ा है. एंड when she see at the back side, तो sorry, he was see at the back side, तो it was a fireman. वो कौन थे, fireman थे. I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. So उन्होंने कभी ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया था जो फायर ट्रक से जो पूरी ट्रक्स भरे हुए थे. आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैप्स. अब वो ट्राई कर रहा था उसके हाथ से छोड़ने का कि वो छोड़े, ये लिंग मतलब वो चिल्ला रहा था, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज in there. So basically he was screamed at him कि you don't understand, my mother is in there, my mother is inside, I want to go to save her. He held on to me while other firefighters ran into the house. So just उन्होंने hold करा और जो other firefighters थे वो घर के अंदर जाते हैं. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go I would run. He was right. So देखो वो क्या था कि उसको लगा कि नहीं वो सही थे, मीन्स फायरमैन थे, he was right because उनको रोक लिया. अगर वो अंदर जाते तो शायद हो सकता है वो खुद को नहीं बचा पाते, तो अपनी मदर को कैसे बचाते. So it was very logical thing did by him, means by the fireman. It's all right, they will get her, he said. So वो अपनी मदर को ले आते हैं, बोलते it's all right, सब कुछ ठीक है. He wrapped a blanket around me and set me down in a
कार। सो जस्ट उनको वो कार में बैठे थे, उनके कार में उनकी मदर को एक ब्लैंकेट में रैप करके लेके आया गया, उनकी मदर को बैठाया। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस विद माई मॉम इन टो। इन टो मीन्स फॉलोइंग क्लोजली बैठ, उनकी मदर उनके पीछे से आ रही थी। पहले तो उनको वो रैप करके लेकर आए, ठीक है। फर्स्ट में जो ऑथर थे उनको वो रैप करके लाए, बाद में उनकी मदर को। ही क्विकली टुक हर ओवर द ट्रंक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। जब उनको साइड में रखा, उनके ऊपर ऑक्सीजन मास्क रखा उनकी मदर के ऊपर। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट दो ऑफ लॉसिंग हर। सो बेसिकली क्या होता है, यूजुअली हमारे साथ भी ऐसा होता होगा, नॉट यूजुअली, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो जैसे ही उनकी मदर उनके पास आई, ही हग्ड हर मदर एंड ही हग्ड हिज मदर एंड सेड कि ऑल द टाइम वो हमारी अपनी मदर से क्या करते थे, आर्गूमेंट्स करते थे, हेट करते थे, राइट, क्योंकि जनरेशन गैप होता है, थॉट्स मैच नहीं करते। बट नाउ वैसे जैसे उनको पता चला कि वो अपनी मॉम को खो सकते हैं, ही वॉज लॉसिंग हर मदर, ही वॉज लॉस्ट हर हिज मदर। सो सडनली उनको बहुत ज़्यादा प्यार आया और वो उस थॉट में चले गए। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेट द फायरमैन। फायरमैन कहते हैं कि नहीं, वो अभी बिल्कुल ठीक है। शी जस्ट इनहेल अ लिटिल स्मोक। तो इनके साथ क्या, जस्ट उन्होंने इनहेल कर लिया कि स्मोक को, दैट इज द रीजन कि उनको ऐसी उनकी हालत हो गई। एंड देन ही रेन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेड डेज। तो बेसिकली क्या हुआ कि अब वो बिल्कुल रेडी है। डेज मीन्स अनेबल टू थिंक क्लियरली, राइट, ऑन दैट नॉर्मली ड्यू टू स्मोक। ड्यू टू स्मोक वो बहुत कुछ थिंक नहीं कर पाए थे प्रॉपरली। सो आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। सो जैसे ही वो कार में बैठे थे, अपनी मदर को देखे थे, फिर उन्होंने अपने घर की तरफ देखा और देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है जो उसके बारे में वो कुछ कर नहीं सकते हैं, हेल्पलेस बहुत फील कर रहे थे। सो बेसिकली वी कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट 1 and the part 2 we will continue this chapter in part 2. So thank you for watching.